Life Simplified. Hello everyone, welcome to Life Simplified live session. Sorry for the interruption in the previous video. We will start again. So today we are going to talk about the energy and the attitude, especially in connection to bargaining, and how is it connected to abundance mentality. So इस abundance series में we have kept one session specially for bargaining, simply because ये ऐसा subject है जहाँ पे बहुत बार बहुत लोग confuse हो जाते हैं, and in the interest of bargaining sometimes we might underpay people. Grandmaster Chow Kok Sui very well says, एक मास्टर का बहुत अच्छा quote है, that underpaying people is a form of stealing. I repeat, Master says a very beautiful quote, and in that quote he mentions that underpaying people is a form of stealing. Now, बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम लोग बार्गेन करने की कोशिश करते हैं, we often bargain, which is okay, but we have to follow our inner conscience of knowing कि कहाँ पर हम line cross कर रहे हैं. Sometimes, say for example, you're bargaining, you're doing a business deal. Now, हर एक negotiation भी एक तरह का bargain है. So, even in the business world, I have seen कि अगर कोई एक business deal के लिए bargain कर रहा है, किसी से कुछ interaction कर रहा है या negotiate कर रहा है, अगर सामने वाला जो बैठा है, if that person is kind of a startup, so जो startups होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ठीक है, तो starters है, so even if they are good quality people, but because they have not priced themselves well, even if you feel that ठीक है कि ये तो starting में ही है, अभी अभी शुरू किए हैं, तो लोग ये बोल के सामने वाले को दबा देते हैं और ये बोलते हैं कि ठीक है अभी तो you've just started, हम तुमको बहुत रेफरेंस देंगे, हम तुमको और बिजनेस देंगे, तुम एक बार काम तो करके देखो. So this is a form of sometimes stealing. It may be a form of stealing, especially if you're getting all those services and just because सामने वाला जो इंसान है वो मजबूर है, that person is very desperate to get that business, that person is very desperate to have you as a client. Maybe उसकी कुछ घर में सिचुएशन है या फैमिली में सिचुएशन है या लाइफ इज गोइंग थ्रू सर्टन सर्कमस्टांसेस, और उस सर्कमस्टांसेस का अगर हम लोग फायदा उठाते हैं, दैट कर्मा इज नॉट वेरी हेल्दी फॉर अस. Many times bargaining or negotiating, yes, we always have to negotiate. Every moment, every time we have a transaction, we negotiate. Not just with the sabzi walas or auto walas or taxi walas or in business, but there are also negotiations happening in the family. अच्छा तुम मेरे लिए ये करोगे तो हम तुम्हारे लिए करेंगे. Sometimes we are doing negotiations even with our children. We are doing with our relationships. So in fact, if you see, हर समय दिन में कम से कम 20 से 25 बार minimum we are negotiating with someone or with something or the other. Now, how can we have a healthy attitude? Now, अगर आपका mindset, अगर mentality ऐसा ही है, अगर subconsciously आप हमेशा यही सोचते हैं कि जितना मुझे कम में सब चीज़ मिल जाए, जितने कम आउटपुट से मुझे और बहुत चीज़ मिल जाए, मतलब अच्छा है. So this at times might be a form of stealing. This subconscious thought will make you bargain and will always want extra, and you will want to give extra but receive, you want to give less but you want to receive more. So this is a form of stealing. I repeat, when you want to give less and receive more. अब इससे सबसे खराब बात क्या होती है कि देयर आर सम पीपल हु आर वेरी गुड एट इट, कि अच्छा सामने वाले को कैसे प्रेशर में डालना है, सामने वाले को कैसे उसके डेस्परेशन का फायदा उठाना है. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी स्किलफुल, एंड आई हैव सीन इन फैमिलीज, समटाइम्स इफ समबडी इज वेरी स्किलफुल एट बार्गेनिंग, लोग अक्सर उसको शॉपिंग में साथ में लेकर जाते हैं, या कहीं पर भी कोई नेगोशिएशन डील्स करनी है तो उसको साथ में लेकर जाते हैं. नॉट बिकॉज दैट पर्सन एक्चुअली हैज द स्किल, उसके अंदर ये स्किल होती है कि वो कैसे सामने वाले को दबा करके कम से कम देने के अगेंस्ट में हमको ज्यादा से ज्यादा कैसे मिल सकता है. दे आर काइंड ऑफ गुड एट दैट, बट we also have to be aware about our karmas, and one thing where we need to maintain a healthy attitude, and our attitude should be to have a win-win situation. मतलब आप जो दे रहे हैं और उस देने के अगेंस्ट में आपको जो मिल रहा है, it should be a win-win situation for both the parties. May it be relationship, may it be a business transaction, or may it be any form of transaction.
आइडली इट शुड बी विन विन सिचुएशन। मतलब सिर्फ हमको ये नहीं सोचना है कि हम जीत के आ जाए, सामने वाले का जो हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज विन लूज सिचुएशन, मीन्स यू आर विनिंग but the other person is losing, and you are okay if the other person loses. So this is selfishness. Okay, so this is a wrong bargain. और इसमें क्या होगा कि karmically this karma will come back to you. You will also end up in some deals जो आपके लिए एक वो बोलते हैं ना कि घाटे का सौदा हो जाएगा. You will attract people like that in your life who will not give you enough against the services that you give them. It may not be in business, again I repeat. हो सकता है कि आप बिजनेस में ऐसा कर रहे हैं लेकिन उसका कर्मा आपको रिटर्न में आ रहा है थ्रू फैमिली मेंबर्स. इट इज पॉसिबल लाइक दैट बिकॉज व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप. सो इफ यू आर ऑलवेज सोइंग दैट यू वांट टू रिसीव मोर बट यू वांट टू गिव लेस, देन दिस कर्मा विल कम बैक टू यू फ्रॉम समवेयर. इसीलिए मास्टर बोलते हैं दैट अंडरपेइंग पीपल इज अ फॉर्म ऑफ स्टीलिंग. नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट मी आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन. सपोज आपको आपके ऑफिस में कोई एक एम्प्लॉय हायर करना है, यू नो यू आर प्लानिंग टू कीप एन एम्प्लॉय फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, और उस पोस्ट के लिए आपने मन में सोचा कि इस पोस्ट के लिए योर बजट इज से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, एंड you started taking interviews for that post, and then you suddenly came across a person and you liked that person in the interview and you asked that person about the salary expectation कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, और वो इंसान आपको अच्छा लगा amongst all the other people. Now what if that person tells you that I want 8,000 rupees? आपके दिमाग में बजट था 10,000 रुपया, लेकिन सामने वाला जो आपको उस प्रोफाइल में फिट होता दिख रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान इस काम को अच्छे से संभाल पाएगा, लेकिन उसने दैट पर्सन आस्क्ड, उसने मांग की सिर्फ 8,000 रुपए की. दैट पर्सन इज ओनली आस्किंग फॉर 8,000 रुपीज. व्हाट विल यू डू? थिंक अबाउट इट. व्हाट विल यू डू? What do you think you will do in such situation? So now जो लोग विन लूज कैटेगरी, देखिए 3 कैटेगरी के लोग होते हैं. एक कैटेगरी ऐसी होती है who always think win lose, यानी कि हम जीतने चाहिए और हमको हमेशा सामने वाले को हराना ही है. मतलब चाहे कुछ भी हो जाए थोड़ा और निचोड़ना ही है, थोड़ा और कम कराना ही है. वो जितना भी प्राइस बोले थोड़ा तो कम कराना ही है. इट बिकम्स लाइक अ हैबिट. सो फॉर पीपल लाइक दैट, वो सामने वाला 8,000 बोल रहा है, आपका बजट ऑलरेडी 10,000 था, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, उसको बोलेगा कि आप 7,000 में कर सकते हो क्या. दैट पर्सन विल रियलाइज ओ दिस पर्सन इज डेस्परेट, बट आपके अंदर में बजट था 10,000 का, बट देन द ग्रीड स्टार्ट्स कमिंग इन. सो देयर इज ग्रीड. अच्छा 8 में मिल रहा है, इसको हम और थोड़ा निचोड़ते हैं, 7 में ट्राई करते हैं. मे बी दिस पर्सन इज वेरी डेस्परेट, वो तो 8,000 में भी रेडी हो रहा है, तो इतना डेस्परेट है तो 7 में भी रेडी हो जाएगा, मेरे तो 3,000 रुपये बच जाएंगे. सो दिस इज वॉट यू मीन बाय विन lose. You want to win but you are okay if that other person loses. Now इसमें क्या होगा, you in spite of that person asking a lesser salary and in your heart you know कि ये इंसान को आप 10,000 में भी रख सकते थे. अगर वो 12,000 मांगता तो आप उसे 10,000 में खुशी खुशी रख लेते, लेकिन उसने 8,000 मांगे. So then again you want to squeeze a bit. तो एक squeezing की habit हो जाती है बहुत लोगों को. So in this situation, just think about it. What will you do? So ideally, in this situation, what you could do, what you could try, like had I been in this place, I would recommend that yes, you give them 8,000, give that person 8,000 rupees, and after 6 months, if that person is performing very well, then maybe you can raise it to 10,000 rupees. Simply because your purpose is being met and that person feels encouraged. Or maybe after a year, you can enhance a little bit more. This is just a suggestion. So the whole idea is कि हर चीज को हमको फर्दर स्क्वीज नहीं करना है. डोंट कोई भी अगर डील मिलती है, इट इज ऑलरेडी गुड फॉर यू. यस, इफ इट इज अनफेयर, अगर लग रहा है कि सामने वाला का द कैपेसिटी एंड द कैलिबर इज वर्थ 10,000 rupees but the person is asking 20,000 rupees, so then that is a time where you can think of negotiating or bargaining. But in your heart, if you feel that already the pricing is okay, sorry for the interruption. This is part 2 of the video. So let's continue with this. And so just to summarize that जब भी हम लोग कोई negotiation करते हैं या कोई भी तरह का bargain करते हैं,
एक बार के लिए अपने दिमाग में यही लाइए कि विच बास्केट आर यू इन? आर यू इन द विन लूज बास्केट और आर यू इन द लूज विन बास्केट? या आप विन लूज की तरह सोच रहे हैं या लूज विन की तरह सोच रहे हैं? लूज विन मतलब सामने वाला जो मांग रहा है दे दो, बिल्कुल भी मत सोचो। मतलब हमारा अगर ज़्यादा भी लग रहा है तो इट इज़ ओके, लेट दैट पर्सन बी। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गलत तरह के लोगों को भी आकर्षित कर सकते हैं। नाउ विन विन सिचुएशन बेसिकली मीन्स कि मेरा भी फायदा होना चाहिए और आपका भी फायदा होना चाहिए। बोथ द पार्टी शुड विन। And whenever we take decisions based on win-win situation, those relationships, they last longer. Those bargains or those negotiation or those give and take, they last longer. So whenever we make a deal, think about what is it that I want. Second, think about what is it that other person wants. And क्या आपके दोनों की need meet हो रही है? If the needs are getting met of both the parties, then it is termed as win-win situation. And let us adhere to this, because here we will be protected by unnecessary sowing the seed of stealing karma, especially when it comes to underpaying people. So always think at least for a moment or two कि हम जो भी डील कर रहे हैं, जो भी बार्गेन कर रहे हैं, is it win lose or is it lose win or is it win win? और हमेशा विन विन सिचुएशन करने की कोशिश करिए. इफ यू आर गोइंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग एंड you are wondering कि what should be the right thing, so that is what we are going to do now in the healing session. Whenever you go, suppose you're going for an important negotiation or you're going for an discussion on an important deal, what you could do is the healing that we will do now and some affirmations we will do now, you could try and experiment this. और ये आप हमेशा कर सकते हैं, especially before getting into any deal. Okay, so you please try this out and see how you feel, and go with a prayer that yes, may the deal be a win-win situation for both the parties. खुद का भी सोचना है, उसका भी सोचना है. Take care of both the parties. Okay, so let us continue with the short healing. Now, be aware of your heart chakra, which is in the center of the chest area. Be aware of the crown chakra in the center of the crown area. Take a deep breath. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to Master Choa Kok Sui, to the healing angels, healing ministers, to all the great great ones. Thank you for your blessings, your guidance, and your presence. May all the negative thoughts, negative emotions, negative energies in me, in relation to stealing, all the desires to win at the cost of other person losing, may all such desires in my aura get disintegrated right now, so be it. May all those emotions that make me feel that wow, I made a great deal, and you don't care about somebody else's need, may this energy get disintegrated right now, so be it. Mentally say, I let go of all the energies that stops me from a healthy and a balanced give and take. I let go, I let go, I let go. Now let's invoke for opposite positive energies. Thank you, God, for blessing me with an attitude of win-win situations. Thank you for blessing me so that I may always think win-win. I may be blessed. Thank you for blessing me with the ability to make all the negotiations which are healthy for me and also for the other party. May both be successful. May both win. So be it. Gently open your eyes. So you can, or before all your negotiations or important